On May 13, 2024, both Odisha and Andhra Pradesh are scheduled to hold Lok Sabha elections. However, in Kotia disputed border areas, residents face a dilemma regarding which state to vote in. At a 60-kilometer drive from the Koraput district headquarters, with a well-maintained road occasionally diverted by the ongoing Bharatmala project, lies the Kotia group of villages nestled amid small tall hills near Deomali, Odisha's highest peak in the Eastern Ghats. Under this picturesque view prevails an uneasy calm of decades-old territorial dispute. The Kotia cluster comprises 21 disputed villages nestled amidst remote hills on the border between Andhra Pradesh and Odisha. Located approximately 50 km from Koraput and 150 km from Visakhapatnam, these villages are geographically isolated, yet central to the ongoing territorial dispute between the two states. The residents vote in two states, in the Potangi Assembly constituency and Koraput Lok Sabha seats in Odisha, and the Salur Assembly and Araku Lok Sabha segments in Andhra Pradesh. Both states hold simultaneous Assembly and Lok Sabha elections, but this is for the first time these constituencies are going to the polls on the same day, May 13th. The Andhra Pradesh government's action have added to the confusion as they have attempted to sway Kotia voters with various incentives, potentially influencing their voting decisions. This situation has created uncertainty and complexity for residents in deciding their electoral allegiance. Due to the territorial dispute, there might be complexities in voting, with people potentially having ties to both sides. While Odisha gives essential services such as schools, Anganwadi centers, water supply points and job guarantee, Andhra Pradesh focuses on benefits including 35 kilograms of rice compared to Odisha's 5 kilograms and increased payouts. The Patnaik government provides cashless medical insurance cover of Rs 5 lakh per year. The Reddy regime, however, has raised the limit to Rs 25 lakh a year, the same as promised by the TDP alliance. There is a post office in the Panchayat registered in Odisha, a community health center and a police station. While Odisha is promoting strawberry cultivation in the area, Andhra Pradesh officials are meeting farmers, encouraging them to grow turmeric. The residents are enjoying the both of both worlds. However, experts in Odisha suggest the area was part of the Jaipur estate till April 1, 1936, when a separate state was formed based on language. According to a joint survey by Odisha, Bihar and Madhya Pradesh in 1942, 7 villages of the Kotia Panchayat were recognized as revenue villages of Odisha. But the survey didn't include the remaining 21 villages. These villages were also skipped in the survey by Andhra Pradesh in 1956 when the state came into being. However, according to the Union government's Gazette notification, these villages come under Odisha. In 1968, Odisha approached the Supreme Court over their issue, but the Apex Court ordered the status quo following a long legal battle, holding that only Parliament could do justice to the matter of border disputes of states. Sunil Kumar Biswal, Secretary of Koraput Vikas Parishad, highlighted that 21 surrounding villages of Kotia have historically been recognized as part of Odisha since records dating back to 1936, coinciding with the formation of the first language-based states. Initially under the control of the Jaipur Zamindari, Kotia was integrated into Odisha when the state was established. However, a dispute arose in 1971 when Andhra Pradesh laid claim to Kotia, leading to ongoing tensions. कोटिया जो है ये करीब 21 ग्रुप ऑफ विलेजेस कोटिया जो है पूरा जो डिस्ट्रिक्ट में आता है 21 विलेजेस
और ये जो है 1936 में जो हमारा जो डिफाइंड बाउंड्री है, उड़ीसा स्टेट का बाउंड्री है, ये उसी में आता है। लेकिन लेटर ऑन वी फाउंड दैट देयर इज सम डिस्प्यूट क्रिएटेड बाय आवर नेबरिंग स्टेट, दैट इज आंध्र प्रदेश। एंड आज जैसा स्थिति है, वहाँ का जो लोग जो है, उनका जो वोटर कार्ड बोलिए, नहीं तो आधार कार्ड बोलिए, दोनों का जो स्टेट है, दोनों स्टेट की तरफ से है। मतलब सेम पीपुल आंध्र का माने पॉपुलेशन में काउंट होते हैं, उड़ीसा का पॉपुलेशन में काउंट होते हैं। और जैसा कि इलेक्शन में अभी इलेक्शन आने वाला है, पिछले इलेक्शन में ये लोग उड़ीसा का इलेक्शन में वोट दिए थे और आंध्र का इलेक्शन में दिए थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो है, तो उड़ीसा का ही इलाका है वो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। आंध्र का एक सरपंच है, उड़ीसा का भी एक सरपंच है। हाँ, ऐसा है, जो नहीं होना चाहिए। और ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं, आप अगर जाएंगे वहां देखेंगे कि एक एक घर में दो, मतलब उड़ीसा की तरफ से जो फैसिलिटी मिले हैं, वही फैसिलिटी आंध्र प्रदेश की तरफ से मिले हैं। मतलब सेम फैसिलिटी दोनों स्टेट से उनको मिले हैं। किस तरह का फैसिलिटी? जैसा कि पानी का कनेक्शन देखिए, उड़ीसा का पानी का कनेक्शन है उन लोगों का पास, आंध्र प्रदेश का पास जो मिला है वो भी पानी का कनेक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी अगर जाएंगे तो मैंने वैसा ही स्थिति इलेक्ट्रिसिटी हालत में भी है उधर। और क्या क्या है? जैसा चावल है, वही सारे जो सब सरकारी सुविधा जो है मिलता है, दोनों स्टेट से वो लोग मन लेते हैं, दोनों स्टेट से। तो अभी जैसा जो 13 तारीख को चुनाव होगा, उनके पास जैसा आंध्र का भी कार्ड है, उड़ीसा का भी कार्ड है, वो तो कहीं एक ही जगह दे सकते हैं जहाँ। ऐसा होना चाहिए। वो ऐसा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, ऐसा कदम लेना चाहिए कि कैसा एक आदमी कैसा दो स्टेट में भाग ले सकता है। तो कानून है, एक आदमी 2 वोटर कार्ड बनाना, तो वो भी नहीं होना चाहिए। वो भी नहीं होना, अगर हुआ है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो मैंने जो अननेसेसरी जो उनको कैंसिल करना चाहिए। उड़ीसा का जो है वो वाजिब रहना चाहिए। तो सर, आप क्या प्रपोजल दे रहे हैं इसको समाधान करने के लिए और इसका विकास के लिए? देखिए, ये तो पहला तो है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है तुरंत ऐसा कुछ कदम ले, जाकि जो आंध्र प्रदेश की तरफ से जो इलेक्शन कार्ड उनको इश्यू हुआ है उसका मैंने ये करना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि है तो उड़ीसा का ही इलाका है। और दूसरा जो है, जो आपने बोल रहे हैं कि वहां का डेवलपमेंट, उसके लिए ऐसा कुछ एक बॉडी अथॉरिटी ऐसा बनाया जाना चाहिए कि उस इलाके का जो डेवलपमेंट है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की तरफ से, वो थोड़ा और भी माने बेहतर और भी थोड़ा त्वरित स्केल में हो सके। Despite being under Odisha's jurisdiction, Andhra Pradesh has endeavoured to provide similar facilities to Kotia and its neighbouring villages, even holding elections for various levels of governance. Prime Minister Narendra Modi's commitment on Odia Asmita, which is an identity, has sparked hope among residents for a resolution to the disputed, potentially restoring Odisha's rightful claim to Kotia and its surrounding villages. The area in and around polling stations on the Odisha side of the cluster, Kotia and Tala Ganjai Padar, is where the majority of voters are Odia speaking. Andhra Pradesh has set up a polling station down the hill where more Telugu speaking people reside. The distance between the polling stations in Andhra Pradesh and Odisha is around 17 kilometers. However, the polling booths of Andhra Pradesh are far from the villages situated in uphill areas of Kotia. Kotia cluster is located between the Araku Lok Sabha constituency and Salur Assembly constituency on the Andhra Pradesh side and Korapur Lok Sabha constituency and Koraput Assembly constituency on the Odisha side.